Hello, hi friends. Here are top 5 tips you need to remember for your advanced audit and assurance examination. Now, this is not to scare you, but all my students who have cleared ACCA and are affiliates working with corporates, different companies, if I ask them, in your journey throughout, which was a paper which was really challenging to clear, majority of them have answered AAA. What is so special about the paper? What is so different about it? So when you open the AAA textbooks and when you start studying, you'll be able to conceptualize, you'll be able to understand everything. You think that it's fine, it's pretty much manageable. It's very much understandable. But understanding is one side of it. Putting it there on the paper is another side. So all the students who are able to understand and write it in the examination are the ones who can clear the paper in one go. Giving you 5 tips that would make your journey with AAA a little more easier. Number 1, focus on language and presentation. Now, what do I mean by this word language? लोगों को लगता है मैम ने language बोला, she's talking about English. Having good English is important. It's not so. When I mean language, I've been assessing a lot of AAA papers. तो कितने बच्चों के ना आंसर्स उन्होंने क्या लिखे हैं वो समझने में मुझे बहुत टाइम जाता है. Choose the right set of words at the right time. Be simple, clear and understandable. No need to use too many jargons. Point number 2, focus on risk. Now in your AAA examination, your section A 50 mark question comes from risk. सबको पता है section A 50 marks risk में से आने वाला है. तो भी it has been a challenging area for students to do it well. Because there are 3 types of risk: audit risk, business risk and risk of material misstatement. It is very important for you to understand the difference between the 3. क्योंकि अक्सर बच्चे हैं ना ऑडिट और बिजनेस रिस्क में देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस. बच्चे वो कैच नहीं कर पाते हैं तो उनका आंसर क्लियर नहीं लगता है. ऑडिट रिस्क पूछा तो बिजनेस रिस्क डाल देंगे. If you want to pass this paper well in first attempt, make sure that you give enough time to this area, focus on risk, make this as your strong point in your paper. Point number 3, relate to case. Don't give them blank answers. आप समझ रहे हो कि टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ लेंगे, रट्टा मार के वहाँ जाके आंसर लिख के पास हो जाएंगे. नहीं, उनका क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और आप टेक्स्ट बुक का खाली एक रट्टा आंसर लिखोगे, उससे आपको कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं है. It's a 100 mark completely case study based paper. आपको उनका क्वेश्चन पढ़ना है, टेक्स्ट बुक की नॉलेज यूज करके केस स्टडी टाइप आंसर लिखना है. यू हैव टू गिव रेफरेंस टू द केस wherever possible. Your answer should relate to the case study that is there in the question. So make sure wherever possible give reference to the case study. Only then you will get good marks. Point number 4, paper completion. आपको यहाँ पर शुरुआत से ही तेज दौड़ लगानी है. यू हैव टू बी वेरी फास्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स आके बोलते हैं पेपर छूट गया AAA. इट्स अ वेरी लेंथी पेपर. 10, 20, 30 मार्क आराम से छूट जाता है. आप जब पेपर स्टार्ट करो ये बात ध्यान में रख के यू हैव टू बी वेरी फास्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन ए 50 मार्क का एक क्वेश्चन होता है. अक्सर उसमें काफ़ी टाइम लोगों का चला जाता है. 2-2 घंटा एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं. आप 1.5 घंटे में अगर सेक्शन ए वाइंड अप करते हो तो ही आप आगे का पेपर अच्छे से कर पाएंगे. टाइम मैनेजमेंट हर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है. AAA एक थियोरी प्लस अ लेंथी पेपर, सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हियर. पॉइंट नंबर 5, स्ट्रक्चर योर आंसर्स. You need to write enough points to earn good marks. Be wise in delivering your answer. Now, I was assessing a couple of AAA papers and I came across one paper where there was a question A for 8 marks. The student didn't write even a word. And there was a question B for 6 marks. उसमें उसने इतना लिख दिया कि 6 में से 10 तो नहीं दे सकती ना. At max I could give is only 6. आप इतना उसके अंदर लिख रहे हैं, अच्छा आप एक क्वेश्चन में थोड़ा तो लिख देते हैं. Even if I want to give marks in question A, how would I get? कुछ लिखा ही नहीं. तो मेक श्योर यू राइट ऑल द आंसर्स. सबको अटेम्प्ट करो आप. कंप्लीटली किसी को स्किप करना एक कोई सही बात नहीं है. देयर वाज अनदर पेपर वेयर आई सॉ दैट ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क ये 15-20 मार्क के लिए तो आते ही है. 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, 20 मार्क्स. सो यू हैव टू राइट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स. एक पॉइंट 3 मार्क का होता है.
आपको पता है अगर आप एक पॉइंट अच्छे से लिखेंगे तो आपको 3 मार्क मिलेगा. That student, when she was reading the question, she got a lot of points, but when she was writing, 1-2 पॉइंट को ही उसने इतना बड़ा लिख दिया, पीछे कुछ लिखा ही नहीं. अब मैं 15 में से 2 पॉइंट का 6 ही मार्क दे सकती हूँ, बाकी. So I told her you should have structured your answer. When you read the question, आपके मन में जितनी भी पॉइंट्स आती है, अपने आंसर में सबका हेडिंग लिख के रखो. 7-8, 15 मार्क है तो 7-8 पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड मिनिमम. सबकी हेडिंग लिख दो एंड देन क्विकली गो ऑन राइटिंग फॉर ऑल. दिस विल एंश्योर कि आपने 7-8 पॉइंट तो कवर की. नहीं तो लिखते लिखते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक में ही इतना ओवर लिख रहे हैं. तो गिव अ गुड स्ट्रक्चर टू योर आंसर. If it's a 15 mark answer, make sure you write 7-8 points. Give head points, write decent content inside so that the other person can give you good marks. So these are a couple of tips I give to my AAA students. AAA being an optional paper is a very knowledgeable paper, and there are a lot of jobs of auditing across India, across borders. So doing this paper is surely rewarding. All the best.